नमस्कार दोस्तों, आज अपन सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको वर्तमान काल भी कहते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी हिंदी में पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ता है, ती है जैसे शब्द आते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, यानी जो कार्य करता है। V1 यानी क्रिया का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट यानी कर्म और एक्सटेंशन अर्थात विस्तार। अंग्रेजी में विस्तार आखिरी में होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो है जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट आदि को समझाता है। वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्रेजेंट सिंपल को कैसे अच्छे से आत्मसात करें, कैसे सफलता प्राप्त करें, वो देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के आधार पर हम अपना डेली रूटीन यानी दिनचर्या पर एक स्पीच छोटी सी बना सकते हैं। दिनचर्या यानी सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो जो काम हम करते हैं वो दिनचर्या में आ जाते हैं। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, अंत में ता हूँ आ रहा है, फिर ब्रश करता हूँ, फिर मुँह हाथ धोता हूँ। इस तरह से आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक पूरी दिनचर्या बनाएं, जो कि बहुत आसान है। जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, और अंत में एक्सटेंशन लगाएं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning। तत्पश्चात मैं ब्रश करता हूँ। लेटर ऑन आई ब्रश माई टीथ। इस तरह पूरी स्पीच आप बना सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं। इस क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की जो तैयार स्पीचेस हैं प्रेजेंट सिंपल के आधार पर, वो यहाँ प्रस्तुत है। उनको ध्यान से देखें और वैसा ही बनाने की कोशिश करें। कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू। Healthy good morning to all. Good morning. Today I, Raj Pachori, is standing before you to share my everyday routine. To begin with, my day starts at 6:15 with the annoying alarm in my mobile. Then I brush my teeth. Meanwhile, I ask Mama to prepare a cup of tea for me. Then I get ready to come here. I go downstairs and have my tea. And my mama asks about another coaching, that is CL, which is 4 days in a week. 4 days in a week. So I answer her accordingly. After that, I proceed to come here, where Jha teaches us the fundamentals and basics of English. The class begins with the question by Jha that, guys, did I give any interactive or idiom yesterday? So we have to answer him accordingly, whether yes or no. If the answer is yes, so we answer like, yes sir, you gave one interactive and idiom in previous class. Thereafter at 8 a.m. I take permission and I rush to another coaching, CL, which is at Labour Chowk. The class gets over at 9:40 or 9:45 around. Then I come back to my place
when I knock the door, my mama says, "Aage." So I reply, "No, I'm on the way." And then she asks, "Would you go to college today?" So I answer, "Yeah, either yes or no." Then I go upstairs and take a bath. Thereafter, I worship God, and then I get ready for yet another coaching in no time. Then I go downstairs and have my breakfast, and then proceed to another coaching that is at Mahanada, that is Sajal Tutorials for Accounts. Then the class gets over at 12 noon. After the class, the bevy of four friends, enjoy for a while. Then I return to my home at about 12:30 or 12:45. So basically, my days goes in coming and going. Then my mama further asks me that, Raj, what about your lunch? So I reply, no, mama, I take it afterwards. Then I have my lunch, and I feel sleepy because it was a bit a tiring day. It is a tiring day. It's a tiring day. Then I feel sleepy and take a nap for 1.5 hours. Then I wake up at 3:30 a.m. and I get ready for a gym. Meanwhile, I ask mama to prepare a cup of tea. I go downstairs and have my evening tea. Then I proceed to go gym. At gym, the trainer bhaiya asks me, Raj, which day is today? So, for example, if it is Monday, so I reply him, bhaiya, today is my arms day. So he tells me the exercise which I supposed to do. Thereafter, I come back to my place at quarter past seven. Then I take a bath. It depends on the weather, whether it is warm or moderate. Thereafter, I take a rest of 10 to 15 minutes. Then I read newspaper, that is Economic Times and Times of India. And if there is some important news or important column in the article, then I pen down in my current affair diary. Then thereafter, my mama asks me or calls me for having supper, and she says, Raj, have it before it cools down. While having supper, simultaneously, 8:30 I have my dinner. Simultaneously, I watch Chorus on Sony TV at 8:30 p.m. Then I go upstairs and I call my best friend Ritika, and I have conversation for around 30 to 45 minutes in English. So in this pretense, I give some time to English out of my busy schedule. Thereafter, I sit for my studies. Then I sit for my studies till 11:30, around 11:30 and 11:45 p.m. Then I surf internet on my mobile. That is YouTube, WhatsApp, Facebook, and if I feel like listening to music, then I do listen to music, and or YouTube. It totally depends on my mood. Then finally the tiring day ends, and I hit the hay by 1 a.m. Thank you.